नमस्ते अंकल। घेरे में घुसा हुआ है। कांच लगी नहीं, एक आँख से लोगन कांच से देखते वो नीचे नहीं देखता है। नहीं, ये अलग काम हो रहा है ना, वो मटरपोट का काम होता है, ये ऊपरी काम हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, मेरा तो स्पेयर कर दे बेटा। करते अंकल, समय नहीं मिल पा अरे रहा समय है। क्या नहीं, तो लिया तो यारों देखिए असेंबल कर दे 10 मिनट करके। देखिए अंकल, मैं बोल तो कुछ नहीं। चल रहा है ना? ओके अंकल, बनाने वाला आपको मिला चल रही है। निकल के निकल लेना। ओके ओके। नमस्ते अंकल। हेलो, ये कनेक्ट करवा दो। क्या आपका मोबाइल आज ऑफ है क्या? तो एक ही पॉइंट है क्या, मतलब चार्जिंग का? तो घर वाले चार्जिंग
तो अभी तक ऐड आ रहा है, अभी तक नहीं नहीं हुआ आपका सिग्नल। ओके अरे ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, तो फिर वो व्हाट्सएप कॉल करना है बात करने के लिए। तो वो कैसे करूँगा? ठीक है हाँ। हेलो हाँ आया नहीं अभी तक नहीं आया। यही नहीं दिख रहा मुझे। हाँ आ गया, हो गया हो गया। जी नवंबर मतलब अक्टूबर। अच्छा अक्टूबर बाकी है, ठीक है जी ठीक है जी। हम्म। ये जून जुलाई में भी तो क्रेडिट कार्ड था वहाँ पर, जून जुलाई में SPPL में। नहीं मैं एक एक्स्ट्रा अमाउंट है। अच्छा बताओ। हाँ जी हाँ नहीं अपन ने रिवर्स नहीं किया होता है इसको, कैंसिल करके फिर वो नहीं किया क्या, मतलब नहीं नहीं अन्य अच्छा अन्य एप्लाई के मैं करा था तब भी वो रिलेटेड वाला नहीं आया। ठीक है अच्छा हम्म, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये जून जून का है ना ये, जून का क्रेडिट भी देखिए ना, क्रेडिट भी है इसका। ये इनपुट आया ऊपर वाले में तो आ गया है, वेक्टर वाले केस के लिए नहीं आया है। वो जो अपने मेनल वेटिंग कराए ना बाद में जा करके वो उसमें नहीं आया वो। ये मतलब ठीक है ये ठीक है ओके हाँ। ये तो इसका मेन केस हुआ, क्रेडिट नोट का क्या हुआ इसका? क्योंकि क्रेडिट नोट अपन बड़ौदा में लेते हैं तो इसका क्रेडिट नोट आया कि नहीं आया वो भी मायने रखेगा ना अपने को बात करने में। ये मैंने जो प्रॉपर्टी कराई तो ज़्यादा हो गया। अच्छा हाँ अजय जी सेंट्रल के हैं मजदूर हैं फोटो में सब डाटा है यहाँ पर। फोटो के डाटा में है अपने पास में कि फोटो के डाटा मिसिंग है? नहीं अपने सिस्टम एक मिनट मैं कॉल के नंबर से देखता हूँ। हाँ हाँ जी जी
नहीं तो डेबिट नोट तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्रेडिट नोट अपन नेगेटिव करना है। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। हेलो हेलो हेलो, हाँ वही जगह पकड़ा है, हाँ वही दिक्कत है। तो ईडीए का क्या करूँ मैं, क्या किस कैटेगरी में डालूँ उसको? ईडीए को अच्छा, हाँ इनको सीएन तो लिखा है, इनको डीएन भी लिखा है पहले। हाँ ठीक है, मैं फोन आपको दूसरी लगाना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ फोन लगाना। हाँ व्हाट्सएप पर करना रहेगा, या फिर आपको वो जो मेरा दूसरा नंबर जो है ना उस पर कॉल करेगी तो फिर बात हो पाती है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर तो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। नहीं तो आपके नहीं नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप पे अभी तो कोई इशू है ना, इसमें चार्जिंग नहीं है इंस्टॉल की, चलिए ठीक है। क्या हुआ है, अगर चार्जिंग चालू कर लिया, इसको चेक कर लिया? ये चार्जिंग प्लग खराब हो गया अंकल, ये प्लग लाना पड़ेगा। चार्जिंग प्लग? वो प्लग खराब हो गया। मतलब मेरा? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो वायर कट कर दिया था, वो प्लग अंदर से ना टूट गया, डैमेज हो गया। इनको डीएन बना रखा है ना अपन ने, इसमें मैंने इनपुट डीएन, इसी में क्या डीसीपी दे रखा है अपन ने, तो एक तो ईडीए भी डाल देते हैं इसमें अपन। ठीक है, एक मिनट, वो एडिट मोड में खोलना पड़ेगा ना फाइल को। नहीं इसको पता है, एडिट करने के लिए एडिट मोड में खोलना पड़ेगा ना फाइल को। एक मिनट, ये ओपन इन एडिट मोड, ये तीनों होगा चालू, मैंने कर दी थी शायद। तीन हो गई ना? तो नहीं मालूम, मेरे को थोड़ा खराब थी अपन। हाँ डालिए ना बुक में, ईडीए, हाँ 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 एडिट है। अभी अंकल ने पूछा था मुझसे, हाँ, कि खराब क्यों आपने बोला ना? हाँ ये वाला फिट, अरे 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 हाँ, देखिए हाँ, थोड़ा बहुत कीमती है इसका, ये सेटिंग गलत है, कीमती सेटिंग है। हो गई। ये भी कुछ करें, ये क्या करता है इन दोनों के बीच में, जो बीच कैसे कैसे तेरह घुमाने वाला करता है ना, तो कंपनी वालों ने एक नीचे से पत्ती ला के रखी, बिल्कुल पतली सी पत्ती। एक एक बार ऊपर से जाता होगा ना, ये दो टच हो रहा है ना, ये पत्ती,
ये होगा ना उसका। नहीं गियर तो ये रहा, पट्टी है ये सेंसर पट्टी है, कितना पीछे लेना इतना आगे जाना, इससे आगे एकदम से मोटर बंद हो जाएगी। ये पट्टी है, ये पट्टी यदि कोई भूल जाए ना तो इसकी मोटर चलते चलते अंदर जाम हो जाए। मोटर का ये है बोला, खोले तो ध्यान रखना। बढ़िया हो गया, बस फिट करना ना, अभी पहले मैंने सोचा कल में बस क्या कहानी हो गई, नहीं हो गया बिल्कुल। फोटो से आना चाहिए था ना, कौन सा रखकर मिला इसका फिर? वाइट कर दिया ना इसको, ब्लैक वाले में फिटिंग नहीं, कलर तो मेरे को ये मिल गया था तो मैंने वाइट कर दिया, ये रख कर ये ज़्यादा अच्छा दिखा। नहीं मैंने डेबिट कार्ड पे खाली बिल लिया हुआ। हाँ हाँ, तो मतलब इनवाइस की जो टोटल अमाउंट है वो तो एक ही है, सेम बिल नंबर ही है, और जो उसके आइटम्स जो हैं वो डबल हो गए। अच्छा, इसके आइटम्स आधे कर दो, ये बोलना है आपका। आइटम आधे कर देता हूँ, तो उसमें से कुछ एक आइटम आपके सेल आउट हो गए होंगे, कुछ एक नहीं होंगे, हुए होंगे ज़्यादा पहले काम के तो कभी अंत तो नहीं है। इतनी तेज आवाज आती होगी इसमें बात करने में, ये फुल कर देना, लाउड इतनी काम कर, ये देखो ना, एक इधर एक इधर। वो फोन भी नहीं उठाते। हेलो, ये आपके 6 आइटम अभी भी स्टॉक में हैं, कंफर्म है? 32 पीस थे, अब 16 हटा दिए, 16 बचे, 16 में से जितने स्टॉक में थे मैं सिंगल वैसे नहीं हटाया, मैंने स्टॉक में से एक ही आइटम है आपका मेरे ख्याल से, नहीं तो मैंने आधे कर दिए ना, 100 दिए, वो बाकी के पीस आपके 16 में से नहीं वो रिकॉर्ड नहीं, मतलब मैं कहना है कि वो मैंने हटा दिए कि मतलब दोबारा नहीं आएंगे वो, अब कौन से सिस्टम में है वो अपने को मालूम है। 6 पीस आपको पे ही आएगा ना, एक ही आइटम है तो वो तो आप लोग कैसे पता लगे कौन सा पीस अपने पास था, कौन सा अपने रखा, वो तो जब सेल आउट होने आएगा आपके यहाँ से तो आपको पता लगेगा इसका। जो टिकट गए उनका मैंने कुछ नहीं करा, बाकी जो 16 बचे हुए थे उसमें 16 में से मैंने आपके जो खाली थे, हाँ 22 बचे थे, तो मैंने 22 का भी चेक हो दिए, 22 और 16 का दिया। हेलो, हाँ, इन वालों को अपन तब कर देंगे कि सेल आउट हो गए। हाँ बारकोड है तो कौन कौन किसके हैं, आप इस बिल को दोबारा एंट्री कर दीजिए, मेरे को इस बिल में ही मालूम है कि कौन से आइटम आपके सेल आउट हो गए, तो ये इस वाले बिल को से देखकर जो सेल आउट हो गए उन बारकोडों को अपन मार्कअप कर देंगे, ये सेल आउट हो गए, और फिर बाकी के जो पीस बचेंगे वो अपने स्टॉक में रहेंगे, तो आप इस बिल की दोबारा एंट्री करवा दीजिए थोड़ा आइटम, तो फिर मैं इसे सेटिंग कर दूँगा इसमें। हाँ एंट्री कल कर दीजिएगा तो कल फिर सामने वाले ने वर्ड ये बोले थे कि 16 पीस है, आधे पीस हटा दो, तब ये नहीं बोला कि मेरे अलग अलग आइटम भी आइटम सेम है, बारकोड अलग अलग है। अब कौन से आधे पीस, जब मैंने 16 पीस आधे 32 में से 16 रहने दिए, आधे हटा दिए, तब वो बोलता है कि बारकोड मेरे तो फिर अलग अलग है। डबल का डायमंड मैंने तोड़ जाता है पूरा पूरा चेक करो, और अब तो गले पड़ गया। अब मैं कैसे पता करूँ मेरे तो स्टॉक बहुत सारा है, 500 पीस है, 500 पीस में से कौन से 6 पीस मेरे स्टॉक के बारकोड बचे हैं क्या करूँ। फिर बाद में ये थोड़ा सा लिया कि मेरे पास फिजिकल बिल तो होगा ना, तो उसकी एंट्री दोबारा से कर दे, तो जो सेल आउट होगा वो मुझे मालूम है, वो मैं मानता हूँ।
उस व्यक्ति का फोटो के लिए तुम्हें वोट है बताओ, तो साड़ी का फोटो खरीदना, खुद की साड़ी का फोटो खरीदना। अब क्या अपने जो फॉलोवर्स है ना, जो लोग फॉलो करते हैं